Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Whatever doubts you guys are having, please do ask. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, Tosif. Good morning, Nathan. Good morning, Ritesh. Good morning, Srikan. Good morning, Varun. Sir, intact ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ please morning. The short one, huh? This. What do you notice over here? If I close this, the zone between A, B, C candle, right? So is the C candle intact with the B candle? No. And if you notice at the same moment, A candle and C candle wasn't intact, right? Henceforth, the market movement could have been taken the intact of the bullish side. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So henceforth, this movement took a play over here from this zone to this, right? And carry forwarded the movement towards the short, wherein this was a 1 hour intact. It couldn't break. So henceforth, from this point of action only, market continued the movement, creating a minimality M1 in the formation. एक मजेदार चीज है, एनालिसिस हो जाने दो उसके बाद. Okay, let's start with the analysis. Starting 1 hour time frame. कल पूरा दिन मार्केट ने क्या किया, एक ही जोन में खेला, बट जोन वाज प्रीटी बिग, जो कि मार्केट हैज स्टार्टेड टू इंडिकेट दैट 200 300 pips is the max that I'll be giving to you, right? So in these positions, what are the major things that I have to look for? First allocation point, high volume had been created at this range, right? On yesterday's day. From that point of action, market has been in the bullish side. Post that, entire day the market was in the iceberg zone wherein it was coming down for an intact, continuing the movement. So every movement action plan was taken under the consideration to the previous, right? And if you notice in today's scenario, we had got one high volume of today, not comparing to yesterday, right? In this red candle. So what is this indication, right? When the market was in the bullish side, with the bullish side of previous, today's rejection indicated with a high volume towards a long. Why? Because the retracement allocation point and the range of the volume is just below 50% of the previous. Henceforth, the retracement volume was taken under the consideration. We tried for a break, which didn't
give a break. Henceforth, the long with an intact was taken under the consideration, right? So at this current point, what are the next major things that you have to look for? जितने भी लोग ट्रेड किए नहीं किए, दैट्स टोटली फाइन. आज का दिन में आपको एक अच्छा खासा 200 250 पिप्स का मूवमेंट मिलेगा, with followed through of only one thing, that is, let market create a dilution at this point in 1 hour and then continue the movement for 15 minutes minimally, right? If this formation gets into the play, then we can look for the next action plan, right? So at this current point, what do you notice? One LG candle, one intact zone, right? Will the market move directly to 150%? The answer is yes, right? So reason behind it is entire day of yesterday was in the zone. So if the market needs to create a good movement plan of action, it has to create a dilution. With the dilution, the liquidity has to be formed of a small volume trade. Once that liquidity is formed, then the next plan of action will be taken under the considerations, not prior to that. Okay, so that is the current way of looking into the markets. With that, एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, right? Market last continuously अगर देखोगे, what it has done, three gap ups which hasn't been completed yet. Okay, so gap up one, gap up two, gap up three. Three gap ups is the major next liquidity point of action. अगर ये liquidity नहीं दे रहा है market, तब तक के लिए स्लो एंड स्टडी मूवमेंट में रहेगा. फास्ट मूवमेंट अगर डेवलपमेंट में चाहिए तो मार्केट ये तीनों में से दो लेना जरूरी है. ओके, तब तक के लिए डायरेक्शन बुलिश ही है. प्रेशर बिल्ड होता है 1 आवर में, विक के साथ वॉल्यूम के साथ शॉर्ट करेंगे, तब तक के लिए मार्केट आज के दिन में बुलिश दिखने वाली है. एशियन एंड लंदन सेशन. ओके, सो फॉलोड थ्रू. जिस तरफ का भी ट्रेड कर रहे हो, एक चीज याद रखना, गैप अप वन, गैप अप टू, गैप अप थ्री बहुत जल्द लेने आएगा एक, राइट? सो follow a proper setup for an execution. Let it be towards long, let it be towards short. Without dilutions, don't look for a swing holding at the current stage, right? Agastya, Arundhati ma'am, Smita ma'am, everyone's MTSL will move below this candle, which is 4646. So this is the analysis for today. Whatever doubts you guys are having, please do ask. And intact what you were asking for, no? अगर मार्केट सस्टेन होता है समझो 4694 के ऊपर, टारगेट्स आर मिनिमलिटी M2, सॉरी M1 200%, 4705, which is exactly mapping with the zone of action plan of this current moment of minimality. नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इस जोन में अगर मैं स्विंग के लिए बैठूंगा, पहला मेरा ऐसे लुटाएगा. Two scenarios needs to be created at this point. Simple and easy. बता देता हूँ. या मार्केट पहला लॉन्ग के लिए ट्रेड दे, जो कि दे चुका है, एंड ये जाने दे 4724 तक भी आएगा, आई एम हैप्पी, राइट? Post that, continuity towards the drop with a proper 1 hour wick candle, high volume towards short. That's when I'll be looking for swing holding towards short, not prior to that. Am I clear?
हाँ, 100, 150 tips that you enjoy. ID trades, not an issue. That's what I said, no? Okay, I had to teach you, no? So just for an example, समझो मार्केट विक छोटा छोटा क्रिएट करते हुए ऊपर के लिए जा रही है. ओके, कीपिंग इन माइंड यहाँ पे सेलर प्रेशर्स डेवलपमेंट में है, राइट? So let me explain it in the chart. Okay, so always remember, whichever side has the bigger wick in 1 hour and the smaller body of the top candle followed with the high volume, right? Just like how Trishul works, right? So in that formation, one thing that you have to keep in mind is that is going to convert into a big swing trade. Example of Friday's short movement which got converted into bullish side, right? If you look into that scenario, how does the market tend to follow? By seeing in 15 minutes, it showcased a nice movement towards a short, wherein with 0.5% and all, everyone got into the trade. But in 1 hour, if you notice, what do you see? The high wick, right? This is the pressure indication of a trade direction which gives you to the movement, right? So with this high wick range, what do you notice? The high volume, right? Henceforth, the direction has got converted towards bullish, right? अगर ये सिनेरियो में पकड़ के चलो, सेम हाई वॉल्यूम के साथ ये भी तो हाई विक है, राइट? बट ये स्विंग में होल्ड कर सकते हो नहीं, ये इंट्राडे के लिए 200 300 पिप्स 400 पिप्स तक ठीक है, right? So with a higher wick, with a higher volume, always indicates a direction of holdings. So वो point of action से कहाँ पे भी trade of execution देखो, you can hold it up nicely. Okay दोस्तों? Good morning Viraj. वो अकाउंट में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये जोन में मेरे को उड़ाना नहीं है वो. नेक्स्ट होल्डिंग में ट्रेड करूंगा. It's currently at this number. ओके, एक्चुअली इस दिन में ट्रेड करना था, बट इस दिन में मेन अकाउंट जो है उसमें ट्रेड कर रहे थे, तो हेंस फोर्थ वो छोटा अकाउंट में ध्यान नहीं गया. सर क्या 1 आवर वाली कैंडल से हम TTS 2.2 मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाकर टारगेट्स निकाल सकते हैं? अपसाइड का निकाल सकते हो, बट होल्डिंग भी उसी हिसाब से होगा, पेशेंट टेस्टिंग बहुत होगी,
who is not habited for that allocation will not do it, right? So who wants to get habited, start with a smaller lot size. सबका MTSL start करना follow करने के लिए 4 minutes sustain हो जाएगा kind of beautiful. ये अभी देखो 20 पे शुक करके जाएगा. This is cheating. Sir, how to control overthinking? भगवत गीता पढ़ो. एक चीज समझो, when you can utilize that time on overthinking, why can't you overthink the best possibilities rather than negative, right? Okay, Patel. Plan of action will be taken under the consideration of directions. Okay. So अगर 1 hour में TTS 2.0 allot कर रहे हो, the first plan of action will be always taken under the consideration of intacts. Intact के हिसाब से ही trade off execution plan करना, results will be way too better. Is that 83.76? Yes, it is. Sir, how did you know that यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आएगा, कंटिन्यू करेगा? क्योंकि मार्केट इंडिकेट कर रहा है यार. इट्स वेरी क्लियर. जो भी बोलने के बाद एग्जीक्यूट किया उनका भी 60 पिप्स चल रहा है. ये डायरेक्टली 70 जाएगा. सॉरी 88. आईजी में ऑलरेडी 89 चल रहा है. What a move, what a analysis. बोल भी कौन रहा है? फर्स्ट एंट्री तो पता है, सेकेंड एंट्री कहाँ पे किया है तूने?
नहीं, आप कौन से आईजी के बारे में बात कर रहे हो? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट आईजी मार्केट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट आईजी ग्रुप्स. हम चले बहारों में, क्या करें. 60, 65, 68. 60 तो पता था, 65 का है. टाइम 7:30 का कैंडल. ओके, ये वाला नॉट बैड. एंड अनदर वन है 68. उसका भी टाइम बता दो भाई. दिस वन मतलब विराट समझा नहीं. वो जो ग्रुप में शेयर किया था वो वाला, हाँ वो वाला आईजी का है. कल जो शेयर किया था ना. और थोड़ा ऊपर आ जाने दो, बाद में मजा आएगा. MTSL 4679 पे रखना, 68 का और 65 का. 60 का MTSL 4672. आईजी का डेमो अकाउंट में गोल्ड चार्ट. दिखेगा, ये लिंक बोल रहा है. गुड मॉर्निंग राज. ब्यूटीफुल. कितना लेट आया ये मूवमेंट. 150 pips target completed guys. TP1 hit as per the group. आ जाओ यार, हो गया है मूवमेंट. एक नंबर.
92. सिस्टम ट्रेलिंग सभी लोग 250 पिप्स के पास रख लो, आईडी वाले। थोड़ा बहुत होल्ड करने वाले देखना चाहते हो तो 4679 पे रख लेना। ओके। 95। सर चार्ट पे मार्क कर दो ना कहाँ पे। होल्ड करने वाले 70, 4679 यहाँ पे। आईडी वालों का निकालना है तो निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि TP1 हिट हो चुका है। बट फोमो में मत रहना मूवमेंट के बाद। क्लियर कट अभी बता दे रहा हूँ। राइट। दिस इज द रूल शी विल बी फॉलोइंग। Streaming will be there for next 15 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Sir, motivation. Consistent रहो market में. Motivation is just for 5-10 minutes. Focus on learning and have a discipline. That is way more important than motivation. Okay. Sir, analysis बता दो. Rewind करके देख लो. Good morning, Faida. निफ्टी में शॉर्ट में बैठे हो. नाइस. जिंदगी इस सफर सहारा राज, अगर स्ट्रीम पे हो तो जो सुबह में सेशन हुआ था उस सेशन के हिसाब से ही मूवमेंट आया, राइट? सो जो वीडियो है उस वीडियो को एंड इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, जो एक्सप्लेनेशन था उसके हिसाब से।
मिनिमलिटी M1 टारगेट हिट, 200% का भी टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो जाएगा। सर कुछ नया बताओ, इसे मास्टर करो, नया बताऊंगा। Why don't you follow multiple things? Follow one thing which market follows. Simple as that. You don't have to follow everything. लास्ट कैंडल का मूवमेंट अभी दिखा रहा है। चलो गाइस, आईडी वाले एमटीएसएल को ट्रेल करके चलो, स्विंग वाले 79 से 85 पे लेके आ जाओ एमटीएसएल को। सिस्टम ट्रेलिंग उधर ही रहने दो 4679 के पास। Not bad moment, appreciate it, but yet this movement is slow man। यहाँ पे आके ना एक हल्का सा डाइल्यूशन क्रिएट करने दो, उस डाइल्यूशन के साथ formation of previous one and continuity, that should be the plan of action। okay, एक कैंडल में सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, डरना नहीं। क्योंकि वॉल्यूम हमारा साथ ही है अभी भी।
सर एक्सनेस में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो क्या फ्यूजन मार्केट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं? फ्यूजन मार्केट्स क्या है? राइट, जिनका भी कैपिटल छोटा है ना, कैपिटल बिल्ड करने के लिए आप लोग फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, जो बिगिनर्स है, इंस्टेंट प्रॉप फॉर्म लो ना, राइट, create a portfolio in that, build the capital. ब्रोकर नहीं, पता नहीं है, लेट मी चेक कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कल बता दूंगा। सर आप पर तो कैपिटल से ज्यादा ट्रस्ट है, आप ही सजेस्ट कर दो कुछ। सी, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन फ्यू मल्टीपल फर्म्स, राइट, तो जो होगा अच्छा वाला उससे बता देंगे डेफिनेटली, नो डाउट। हाउ डिड यू नो यहाँ पे डर आएगा? क्योंकि सभी लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल के बैठे होंगे कल के हाई का, राइट, वहां से शॉर्ट करने को देखेंगे। henceforth that selling pressure fake वाला दिखा है। ब्यूटीफुल गाइस, एमटीएसएल को 4689 पे रख लो, एंड सिस्टम ट्रेलिंग को 4684 आईडी वाले, रिमेनिंग ऑल होल्ड द ट्रेड्स इन द डायरेक्शन, ठीक है। चलो स्ट्रीम ओपन किए, 45 मिनट्स में 300 पिप्स की मूवमेंट भी कैप्चर हो गई, एंड जो एनालिसिस के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट किए उनका 200 पिप्स भी कैप्चर हो गया, नॉट बैड। Stream will be there for next 10 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask.
कुछ भी कहते रहते हो यार तुम. Always remember, follow the standard road process. If your derived allocation point is being looked in perspective of growth, then manipulate the structure. Simple as that. How to grow a prop firm? Don't plan to grow a prop firm. Plan to grow the account size by multiple tangents. Right? Take a 100K instant account. 3 trading continuous days, right? 3 days of trading, get the payout, create one more account out of it. So 10 accounts is 1 million, right? This is one of the members' idea, which I am just replicating you guys over here. Automate the structure and punch, which he is doing. Weekly payouts के हिसाब से भी अगर you are getting $20,000 on paying off $2,000, it's a good number, no? आप शॉर्ट कर रहे हो, रिवाइंड करके एनालिसिस चेक कर लो, मैं क्या बोला हूँ उसे ही फॉलो करो. Don't go against the markets, guys, please. It's a humble request. मार्केट के अगेंस्ट में जाओगे तो मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा कैपिटल ब्लो करने. Any doubts, guys? पहली बार शांत है स्ट्रीम. Three 30 pips running. Thank you so much for your guidance. You're welcome.
M1 200% of yesterday, sorry, M1 200% of Friday and M1 200% of today. दोनों का टारगेट्स आईजी में हिट हो चुकी है, right? TP1 can be taken under the, sorry, TP2 can be taken under the consideration of closing. अगर होल्ड करना है तो 4689.15 या 16 में MTSLs लगा लो. System trailing at 4686. Swing converters को. Okay. सर यहाँ पे तो हिट नहीं हुआ, हो जाएगा, आईजी में होंगे. 4696.89 है M2 लेवल हो चुका है. Any doubts, guys? Literally after 2 minutes, the movement showcased over here. 2 मिनट के बाद. Beautiful, guys. चलो, और कुछ चाहिए? Target hit. 380 pips in an Asian session. अभी तो 2 सेशन बाकी है, लंदन एंड न्यूयॉर्क. सस्टेन हो गया तो समझो नेक्स्ट टारगेट है 4724, जो कि होना नहीं चाहिए. अच्छा, क्या हो गया?
कन्वर्जन मैप करना है यहाँ पे. Supply converted into demand. All beginners, whichever strategy, whichever rules, whichever concept you guys are following, I don't care. Just make sure 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis come with a smaller capital, compounded following a proper risk to reward. While following a proper risk to reward, make sure to remove fear, greed, and FOMO while executing the trades. Don't give your capital to manhandle, nor follow any tips. Learn before you earn. It's your hard earned money, so make sure you execute the trades by yourself. One good trade is a trade taken by you with following your mindset, your psychology, and your understanding of the analysis, what you do, right? With the wins, you feel happy. With the losses, you learn. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली स्ट्रीम में. तब तक के लिए take care. Bye bye.